Namaskar bachcho. Let us continue with biological classification. We have discussed three kingdoms: Monera, Protista and fungi. Some of the concepts of fungi we will discuss again in the form of comparative study of different classes and that we will discuss in next online class. Lichens. They are symbiotic associations between algae and fungi. Symbiosis means it is an association of two organisms in which both the partners are benefited. Here, algal component is known as phycobiont. Phyco word is used for the algae and fungal partner is known as mycobiont. Myco word is used for the fungi. Mycelium भी इसी से बना है ये mycobiont. Now phycobiont is autotrophic. It prepares food for the fungi, and mycobiont it provides shelter and help in absorption of minerals and nutrients because it's hyphal mycelium structure that help in absorption of nutrients. So both the partners are benefited, and such a close association in which both the partners are benefited, that is known as the lichens. So lichens are very good pollution indicators. तो ये सिर्फ clean areas में ही होते हैं. They do not grow on the polluted areas. Then there is another association of the fungi is mycorrhiza. That is a symbiotic association between the fungi and the roots of the higher plants. Here also, fungi help in absorbing nutrients for the plant, and in return it get food as well as shelter from the plant. तो जिन भी रूट्स में माइकोराइजा, जिन भी प्लांट्स की रूट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन होती है, दे ग्रो वेरी वेल, तो वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो जाती है. सो दैट इज़ अबाउट द सिम्बियोटिक एसोसिएशन. सो नेक्स्ट हम आते हैं किंगडम प्लांटा. किंगडम प्लांटा हम बहुत यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे बिकॉज we have full chapter to discuss kingdom planta. तो generally हम starting में कुछ एक introductory features. They are eukaryotic, they are multicellular and they are producers. Eukaryotic multicellular producers and they have chlorophyll. कुछ members जो होते हैं heterotrophic, पर वो भी they are not completely heterotrophic जैसे insectivorous plant है. They are autotrophic but they supplement their nutrition by catching insects. Similarly, parasite. So some are parasitic. Again, this is an exception in the kingdom planta. Cascuta, that is a parasitic plant. Amarvel हम उसको कहते हैं. So that is just an exception in the kingdom planta. So plant cell, they are eukaryotic. सब कुछ जैसे eukaryote cell में होता है. Well-defined nucleus, chloroplast, mitochondria. All cell wall is made up of cellulose. So planta includes different groups: algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. तो ये हम इसको डिटेल में एक एक करके हमने नेक्स्ट किंगडम प्लांटा. तो दो किंगडम आपको डिटेल में है, किंगडम प्लांटा एंड किंगडम एनिमिलिया. आई मीन डिटेल में तो हमने फंजाई भी किया बट फुल चैप्टर्स ऑफ प्लांटा एंड एनिमिलिया. सो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेरिडोफाइट ऑफ फर्न्स. Kingdom Animalia. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms. So again eukaryotes, सभी eukaryotes हैं एक मोनीरा को छोड़ के. They are multicellular. तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स पिछले वाले तीनों किंगडम में है. और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, दे आर हेटेरोट्रॉफिक. दे आर कंज्यूमर्स. दे डिपेंड for their food directly or indirectly on the plants. When they are herbivores, they directly depend upon the plants, and when they are carnivores, or they eat those animals that eat plants, they indirectly depends upon the plants. Another feature of kingdom Animalia is that they lack cell wall. Here cell wall is absent. They digest their food in an internal cavity, and the reserve food is stored in the form of glycogen or fat.
जबकि प्लांट्स में जो है रिजर्व फूड इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. देन अनदर फीचर जो डिस्टिंग्विश करता है किंगडम प्लांटा और एनिमिलिया को, दैट इज अ लोकोमोशन. All living things show movement, but locomotion is shown by the animals. So they move from one place to another place. Locomotion है ना. प्लांट्स क्या है, अपनी मूवमेंट शो करते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी एक्सेस. उनकी मूवमेंट्स कैसे होती हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ लीव्स, ओपनिंग ऑफ फ्लावर है ना, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, दैट इज आल्सो अ मूवमेंट. बट हियर द मूवमेंट इज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज द locomotion. Then another difference is that animals or animalia, they have the nerve cells, neural control on their systems, whereas plants, they have only hormonal control. They have plant उनमें हार्मोनल कंट्रोल होता है, यानी कि कंट्रोल बाय द केमिकल्स, एंड हियर इन द एनिमल्स कंट्रोल बाय द केमिकल्स एज वेल एज कंट्रोल बाय द nerve cells. So this is all about the biological classification के different kingdom. अब next हम आते हैं virus and viroids. So in the 5 kingdom system, Whittaker की classification में there was no place for the viruses as well as viroids. Viruses are the non-cellular organism. They are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. अगर वो living body के बाहर है तो वो एक non-living things के अंदर है. जैसे sugar salt के crystals होते हैं वैसे ही virus. ठीक है, but when they are inside a living things, they attack a cell, they use the machinery of the host and then they replicate. So virus means venom or poisonous fluid. This name was given by Pasteur, D.J. Ivanovsky, and viruses, they contain genetic material, either DNA और RNA, never both. तो उनमें ये एक एक्सेप्शन है. वैसे तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में DNA is the genetic material, except some viruses where RNA can also be the genetic material. Retroviruses हम उसको कहते हैं, but no virus contain both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. Viruses, they cause different diseases to the human beings also, like we have seen in this corona pandemic, then mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS, that is also caused by a virus. In the plants also, they cause many diseases, mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing of leaves, etc., stunted growth. तो ये वायरस का ये स्ट्रक्चर, एक बाहर प्रोटीन कोड एंड देन अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल RNA. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस. द नेम ऑफ द बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है कि वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. सो यहाँ पे भी देखो हेड, नेक और दिस बाहर जो एक प्रोटीन कोड है, DNA, genetic material, and then there is a tail, protein code and tail, और इस हेड में अंदर जो है वो DNA genetic material is present. Now what are viroids? T.O. Diner ने बताया था viroids. 71 में he discovered a new infectious agent. They are smaller than viruses, तो उसने उसको नाम दिया viroid, and that caused potato spindle tuber disease. They are free RNA, found to be free RNA, means वायरस में क्या होता है, RNA और DNA और बाहर एक प्रोटीन कोड, और इसमें सिर्फ फ्री RNA, नो प्रोटीन कोड इज देयर. तो इसीलिए ये वायरसेस से छोटे होते हैं और इसका नाम वायरॉइड. RNA of the viroid, it was of low molecular weight. So this is about the viroids. Thank you so much, and that completes your chapter, and a few details of fungi we will discuss in the online class. Thank you.